So we did tell this, these questions. So today we are going to handle condensation. Coffee important topic, handle condensation. Did we write anything about the reaction of ketones? Oxidation of ketones is different due to the So first of all, what we will do now, we first of all try to the heading will be aldol condensation. No, wait. Heading लिखेगा reactions due to alpha hydrogen. ठीक है. In this, the first topic will be the aldol condensation. Now, why the aldol condensation is happening and how it is happening, and the statement, the reactants, the reagents, everything else we will talk later. The most important thing that we need to know right now is how to form products. So we will practice a few questions in order to make products. Fine. Rishita and Zaina, you want to please tell me? Yes, sir. Okay. Rishita and Zaina, first of all, we will understand how to make products. Then we will understand the mechanism and why this happens and not happens and everything. Okay. So for example first is, let us suppose we have CH3, CH2. So we are having acetaldehyde plus dilute NaOH. So let me just tell you a brief introduction, like what you need in the reagent. You need a dilute base. That's it. आपको बस एक dilute base चाहिए रहता है reagent. The reactant should be a carbonyl, should have a carbonyl carbon, and it should also have at least one alpha hydrogen should be there. There should be at least one alpha hydrogen for this particular aldol reaction. Now, when we have CH3, CH2, so please understand, there will be too much CH3, CH2. Now, here we have two carbon atoms, 1 and 2. I hope you can see that the second carbon atom is having the CU, C double bond O. That is the carbonyl carbon. And the first carbon, this is the alpha carbon. This is the alpha carbon. And the second carbon, this is carbonyl carbon. Are you okay with the names that I have used? Jasola, please tell me, Rishita, Zaina. Alpha carbon and carbonyl carbon. Yes, sir. Yes, sir. In aldol condensation, two carbonyl compounds react with each other. Two carbonyl molecules react with each other. When we take acetaldehyde, then what will happen? One acetaldehyde molecule will react with another acetaldehyde molecule. How the reaction will take place? First of all, you will expand the carbonyl carbon. You will write the CH3 as it is, write carbon, double bond O, and you will write hydrogen like this. In each and every case, we are going to write the carbonyl carbon in this particular fashion. This carbonyl carbon should be expanded. Okay, and like this, always like this. C double bond O upper, and whatever bond is on this particular carbon atom, usko right, left side में और down side में लिखेगा हमेशा. Plus, further, as I said, two molecules of acetaldehyde will react. So the another molecule, you will expand alpha carbon. So this is C alpha carbon. You will write it like this: hydrogen, carbon, hydrogen, hydrogen. And then you write CHO as it is. In the first step, what is going to happen? This hydrogen will go to this oxygen atom. This carbon will bond to this carbon atom. The carbonyl carbon will bond to alpha carbon. ध्यान से देखिए क्या हो रहा है. ठीक है, I hope you are not writing. Please see. ठीक है, please see. This CH3 is as it is.
bonded to carbon. When this hydrogen goes to oxygen, it will become OH, and OH will have single bond. The hydrogen beneath it will be azimuth. This carbonyl carbon will attach to alpha carbon. This alpha carbon now has only two hydrogens. One hydrogen is above, the other hydrogen is below, and then CH. Let me just give them different colors. Can you now understand what is happening as an pixel meter? Yes, sir. ठीक है अब उसके बाद there is one more step. You just need to heat this a bit. And this heating is generally done in the presence of an acid. And what will happen? You will be beta. Remove hydrogen from alpha. Remove the from. You remove the beta carbon. And what we will make? We will make an alkene. So the alkene will look something like this. The CH3 should I make with different colors? This CH3 is as it is. Single bond carbon. This is having a hydrogen as it is. There will be a double bond now. That means this carbon atom, this hydrogen will be as it is, and there will be a CH. प्लीज इसको समझ समझ के कॉपी कीजिएगा. Yes, Rakshita. A few compounds. For example, this compound it is known as beta hydroxy. Because in the beta carbon you are having a hydroxy group, it is known as beta hydroxy carbon.
In this case, it will be known as beta hydroxyaldehyde. ketone होता तो beta hydroxy ketone. This is known as alpha beta unsaturated aldehyde, because यहाँ पे आपके पास this is your alpha carbon, this is your beta carbon, and between the alpha beta there is a double bond, and hence alpha beta unsaturated aldehyde. If it was the ketone, we would have called it ketone. So this is a little on for making first the beta hydroxyaldehyde also. By the way, you have not NaOH4, है ना? You have not written this, but you see that the reaction is CH3CHO plus NaOH, dilute NaOH. Now, what I was saying is that this is the procedure of making first beta hydroxyaldehyde and then the alpha beta unsaturated hydrocarbon. Now, you can also make the compound. How to directly make the beta alpha beta unsaturated aldehyde? Please see. Maybe you have to do the same thing. Carbon, and you will show the two hydrogens like this. CS3 and the for C3 C double O hydrogen plus there are two hydrogens CH. The blue water molecule like this. You will get the same compound. Can you see that this one will be still? समझ में आ रहा है ना बताएं? Yes, Rishita, समझ में आया? देखिए, how to directly make the alpha beta unsaturated hydrocarbon, sorry, unsaturated aldehyde or ketone. Yes, Rishita, Yeah. आराम से बताना yes or no? Yes, Yes, sir. Zaina? Yes. ठीक है, कॉपी कीजिए इसको जरा. ठीक है, कॉपी कीजिए. ठीक है, तो बस यहाँ पे भी सेम चीज है, ध्यान रखिएगा that this is alpha and this, sorry, this is carbon and this is alpha. ठीक है, नॉट बी आस्किंग CH3 CH4 CH2 CH3 को नहीं करता है, आपको आइडेंटिफाई विच इज अल्फा और अल्फा को खोल के करता है. डोंट टेल मी, ये सुनो रिशिता एंड जाइना. Sir, can you explain once again? Once again, which one? This one, sir. The alpha and the carbonyl. Okay. The carbon atom which is having C double bond O, that is one is carbonyl carbon. What is the alpha carbon? The carbon that is directly attached with the carbonyl carbon. उसको alpha carbon बोलते हैं. That's it. So you'll have to expand the carbonyl carbon. I mean, you have to write the C double bond. CHO को लिखने का तरीका देख रहा है ना? We are not writing CHO. What we are writing rather? We are writing C double bond O and the hydrogen is below. Similarly, we are not writing CSC. We are writing carbon with the 3 bonds and then hydrogen. Okay, so what we are expanding? We are expanding the carbonyl carbon
and for the other molecule, we are expanding the alpha carbon. Does that make sense? Yes, sir. ठीक है, अब बताइए जरा. Let's take second example. CH3, CH2, CHO. That numbers 1, 2, 3. What is the carbonyl carbon? 1, 2, 3. 3. 3 is the carbon. Just a minute. And what is the alpha carbon? 2. What? 2. Correct. ठीक है सर, आप सवाल को. ठीक है. Expand the alpha carbon, expand the beta, sorry, expand the alpha carbonyl carbon एक expand कीजिए. तो just उसके बाद आपको एक अच्छे तरीके से क्या लिखना है यहाँ पे, expand the alpha carbon. Try this. Do it first of all beta hydroxyaldehyde, then alpha beta unsaturated aldehyde. Sir, I don't have my phone with me, so I can't send it to you today. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो है ना, हो रहा है. This 1 minute, sir.
So I'm not sure how to write it. You're not sure how to? How to expand and write. नहीं, वही तो दिक्कत है ना। आपको क्या बोला? फॉर वन यू विल हैव टू एक्सपैंड द कार्बन, और दूसरे के क्या एक्सपैंड करना सर? बताइए तो, है ना? अल्फा। ठीक है, तो आपने देखिए सब तो एक्सपैंड कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, ठीक तो किया, ठीक तो किया, नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं किया। एक्सपैंड अल्फा ना, वैसे नहीं जाएगा भाई। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, मैंने जो आपने लिखा उसको पहले कट कीजिए। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन हो रही है, एक ही में आपने हाइड्रोजन की तरह से उधर भेज दिया। ऐसे कुछ भी नहीं करना है, आराम से रिएक्ट, बिल्कुल प्रोडक्ट बनाने की अभी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है ना? प्रोडक्ट बनाने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अभी आप क्या क्या चिंता कीजिए? ट्राई टू सी हाउ आई हैव आसान कैसे expand? Identify the alpha carbon and then expand it. अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 2. ये बोला, ठीक है। और दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन का कार्बन को लिखिए और फिर 4 बॉन्ड बनाइए। राइट है कार्बन, कार्बन लिख दिया आपने? कार्बन लिख दिया? The first one, CH3, we should not expand that. नो, वो नहीं एक्सपैंड हो, क्योंकि वो अल्फा है ही। ठीक है, आपके पास अल्फा कार्बन ऐसे हैं, ठीक है ना? इसमें 4 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है? सही है। Yes, एक तो हमेशा यहाँ, एक तो हमेशा CHO होगा, सही है। इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे नीचे में क्या होगा? hydrogen. नहीं, नीचे में क्या होगा? देख के बताइए ना। अल्फा कार्बन में दो ही हाइड्रोजन होगा, है ना? Uh, व्हाट इज द थर्ड ग्रुप अटैच? सॉरी, व्हाट इज द Alpha थर्ड ग्रुप carbon अटैच? only has 2 hydrogen. हाँ, अल्फा कार्बन दो ही हाइड्रोजन, तो Uh, एक CHO है और तीसरा क्या है? अरे इतना नहीं मुश्किल है ना? CH3. So आपकी आवाज नहीं आ रही. तो अब आ रही है, सॉरी, समझ आ, ठीक है। तीसरा कौन सा है? CH3 है ना? देखिए, ये तो करना होगा भाई, ऐसा नहीं होगा अनुशिता, ठीक है ना? मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग को सोचना प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना, प्लीज प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। आप ऐसे कीजिए, एक बार हम इस पे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है? देखिए जरा, प्लीज कीप योर माइक ऑन, है ना, एंड जस्ट ट्राई टू सी व्हाट आई एम डूइंग एंड डोंट राइट नाउ, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए, हमको थोड़ा हेल्प कीजिए यहाँ पे। शुड आई एक्सपैंड द फर्स्ट कार्बन? रिशिता एंड जायना, टेल मी। Yes, sir. शुड आई एक्सपैंड द फर्स्ट कार्बन? व्हाई इज दैट कार्बोनिल कार्बन? फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल कार्बन है क्या? Not the first बताइए। one. The third one is carbonyl, so we have to expand that. हाँ, नहीं नहीं, हम क्या पूछ रहे होते हैं? शुड आई एक्सपैंड द फर्स्ट कार्बन, यस और नो? No, sir. No. ठीक, तो CH3 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? पहले कार्बन को एक्सपैंड करना है सिर्फ, है ना? तो सेकंड वाला कार्बन पे नहीं होगा। व्हाट आई विल एक्सपैंड? कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन। Yes, करेक्ट, sir. चलो पे चलिए। Yes, अब उसके sir. बाद बताइए, अब वी हैव टू राइट द सेम मॉलिक्यूल वन मोर टाइम, बट वी हैव टू एक्सपैंड विच कार्बन नाउ? Alpha carbon. वी हैव टू alpha carbon. So should I expand the first carbon? No. No, है ना? तो अब ध्यान दीजिए, तो उसको लिखना ही नहीं है आपको। आपको लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है? आप तो राइट
स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दी अल्फा कार्बन आपने बनाया, उसमें 4 बॉन्ड दीजिएगा, ठीक है ना। अल्फा कार्बन विल हैव 4 बॉन्ड। राइट साइड वाला बॉन्ड तो हमेशा आइदर इट विल बी द कीटोनिक पार्ट और द एल्डिहाइडिक पार्ट, CHO यहाँ पे तो CHO लिख दिया हमने, ठीक है। और देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 hydrogen. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिख दिया आपने, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिख दिया, और क्या बचा, व्हाट CH3. एल्स इज रिमेनिंग, CH3। अब इसको यहाँ पे भेजिए, तो कीजिए अब जरा, पुराने वाले सवाल को देख के कीजिए, आराम आराम से हो जाएगा जरा। So at the end, the water will be another product, right? वाटर छोड़ दो, अभी मेन वाटर, वाटर में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा जितना अगर आपने वाटर लिख के दिया, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. अभी छोड़ So दीजिए। there'll be between the carbons again. सॉरी व्हाट, देयर विल बी, There will be double bonds between the carbon again. राइट नाउ, नहीं नहीं, अभी तो Yes. आपको वो मिलेगा, यू विल गेट नाउ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ना, अभी तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। ये हाइड्रोजन को यहाँ पे भेजना है बस, और आपका बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड विद कार्बन एटम, इसका बॉन्ड this carbon in single bond बनेगा, and this hydrogen will go to this oxygen atom. जहना आपका तो सही है, अब समझ में आ गया जहना। Yes, sir. अच्छा, बता दें हम, अच्छा ऋषिता आप देख लीजिए एक बार, ऋषिता Yes, sir. सी, CH3, CH2, कार्बन का OH, इससे पहले से ही हाइड्रोजन है, वो हो जाएगा, दिस कार्बन के बीच में बॉन्ड, और हाइड्रोजन, और नीचे लगेगा CH, और यहाँ पे लगेगा CH। आफ्टर दिस यू विल हीट इट, और यहाँ से आपके पास वाटर विल बी रिमूव, एंड आपके पास होगा CH3,
CH2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताएं। Yes, sir. सही आया, सही है कि नहीं ऋषिता? I हाँ almost, I mean, everything except for the hydrogen. I got to write it. ये I मिस wrote हुआ, CH. हाँ. CH लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ CH सही, कोई दिक्कत नहीं, नो, बस ये है कि हम जैसे लिखा वैसे ही लिखना चाह रहे थे ताकि ज्यादा बहुत कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब उसके बाद फिर एक केटोन के लिए कर लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल भी सी, ओ CH3। अब आप सर यहाँ पे दो दो अल्फा है, कौन सा alpha? तो नहीं, किसी एक को सेंटर की दोनों ही उसमें, अच्छा मिला दिए, ठीक है, इसको वैसे ही खोलना है, बिल्कुल ऊपर और नीचे करके है ना, कार्बन कार्बन को वैसे ही खोलना है, एक ऊपर और एक नीचे, नॉट इन द राइट साइड, और फिर इसमें अल्फा कार्बन को खोलना है, ठीक है, आराम आराम से नीचे हो जाएगा। हिम्मत करके कीजिए ना, है ना, हो जाएगा। So which one do we take as the alpha carbon atom in this? देखिए We have राइट to वाले को expand. हाँ लेफ्ट वाले को ही ले लीजिए, राइट वाले को एक्सपेंड मतलब थोड़ा सा उल्टा टाइप हो जाए। बुद्धि कार्बन आटम सर, बुद्धि अल्फा कार्बन सर सेम, सही है हाँ यार, ये बताइए सर। Yes, I sir. mean, either you take this CSP or this CSP, that is not going to make any difference because कोई डिफरेंस ही नहीं है CSP CSP में, सही है ना। तो rather than taking the right one, लेफ्ट वाले को देखिए तो फिर आपको आराम क्लियर हो जाए ना। Yes, sir. I mean, since it's a ketone and the double bond oxygen is already given this way, so we just expand one of the CH3s and then नहीं 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 नहीं, हम नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसे एक्सपैंड करके नहीं लिखा हुआ है। दिस इज नॉट हाउ आई हैव एक्सपैंडेड द प्रीवियस केसेस ना, देखिए जरा कैसे एक्सपैंडेड है, थोड़ा तो अलग है। विल हैव टू राइट द टू कंपाउंड्स, ओके, सो है ना, आपको yes, दो sir. बार तो मॉलिक्यूल को लिखना ही पड़ेगा। डू यू सी हाउ आई हैव एक्सपैंडेड द एल्डिहाइड्स?
राइट साइड खाली है कार्बोनिल कार्बन का। इफ यू लुक एट द एल्डिहाइड ना, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ खास फर्क नहीं है। एल्डिहाइड में जहाँ पे हाइड्रोजन है वहां पे CH3 डाल दीजिए, दिख रहा है आपको? लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, instead of the hydrogen you will have the CH3. Look at, try to compare this with the first example. फर्स्ट एग्जांपल में CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, then we have CH3. Can you see that? Yes, sir. अब हो जाएगा। क्या I'll send you my answer, sir. हाँ हाँ, सर ये भी है ना भेजिए। 1 minute. So should we expand like this, or सही ना? आपने क्या क्या एक्सपैंड किया है यार? आपको इन वन मॉलिक्यूल यू हैव टू एक्सपैंड व्हाट? इन वन मॉलिक्यूल यू हैव टू एक्सपैंड। ठीक है ना, हम अब क्या बताएं, अगर आप भूल नहीं रही है रिपीटिंग। इन वन मॉलिक्यूल व्हाट यू हैव टू एक्सपैंड। दो मॉलिक्यूल बनाने हैं ना, एक में क्या एक्सपैंड करना चाहिए ना, बताइए। एक में क्या CH3? एक्सपैंड करना है? Um,
this is, I mean, this is ketone and it's already given C double bond O. अरे भाई छोड़ो, हम वो पूछ ही नहीं, जो उससे आपको मतलब ही नहीं है रायना, समझिए हम क्या कह रहे हैं आपसे. आई एम जस्ट सेइंग you have to expand, you have to write the molecules, the same molecule two times. Correct, Raina? I'm going to teach you constants. Yes. I'm going to teach you constants. That's not going to change. Her X, like if I'm going to teach you specific to one particular question, then that will not benefit. No? आपको बेनिफिट कब होगा, हम ये चीज पढ़ाते हैं, आप उसको हर एक सवाल में लगाते चली जाएंगे. करेक्ट है. So you don't have to worry about what the reactant is. ठीक है Zaina? Clear है? Yes. Where you have to focus. You have to write the molecule two times. है ना? The first time, what will you expand? Which carbon will you expand? पहला कौन सा कार्बन एक्सपैंड करेंगे आप? D. The carbonyl carbon and Carbon then and carbon. And there is a specific way of expanding it. ना आप देखिए जरा, the pink, magenta जो भी कलर बोलते हैं, purple, जो भी कलर, it is expanded in a specific way. ना? Generally, we don't write the molecules like this. Correct? yes. आपको दिख रहा है क्या अलग है, बताइए जरा साइना. How in the way you expand, what is different? सी डबल बॉन्ड O तो वैसे ही लिखा जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. CH3 भी बिल्कुल सही है. क्या फर्क लग रहा है आपको? नॉर्मली आप क्या करते हैं, कार्बन के राइट साइड में हाइड्रोजन डैश बनाते हैं और हाइड्रोजन लिखते हैं. करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है. आपने क्या किया है यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव रिटन द हाइड्रोजन beneath. चलिए ठीक है, और आपको आसान कर देते हैं. यू विल ऑलवेज, जैसे हमने अल्फा कार्बन के लिए बताया था, वैसे कार्बोनिल कार्बन के लिए सुनिए. विल ऑलवेज एक्सपैंड द कार्बोनिल कार्बन इन दिस. ठीक है, फोकस कर लिया आपने कार्बोनिल कार्बन पे. अब बताइए व्हाट आर द ग्रुप्स अटैच्ड, कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड? CH3 and CH3. ठीक है, अब आसान है. ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, बता दीजिए. कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, जैसा भी चीज हो, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक. प्लस व्हाट विल बी एक्सपैंड? अल्फा. ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है. आप ये लिखिएगा, कार्बन विथ 4 बॉन्ड्स. इसके बगल वाले को आप ना सी डबल बॉन्ड ओ सी एस सी, मतलब सी डबल बॉन्ड वो रहना चाहिए, वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन. इसके बगल वाले को क्या कर दीजिएगा हमेशा, सी डबल बॉन्ड ओ. इसके बाद आपके पास सी एस सी, तो आपने सी एस सी लिख दिया. डज दैट मेक सेंस? Yes, आपने sir. समझा ये कैसे एक्सपैंड हो, समझ में आया आपको? दिस व्हाट एंड दिस So your voice is breaking. कार्बन. What is breaking? How about now? Is it any better? Just give me a Yes, sir. second. Wait, but ठीक आ रही है. Now what you will do? C double bond O के बगल में क्या है? CH3 है, like this. Now tell what is this alpha compound with क्या क्या बचा? This alpha carbon is having 3 bonds है, क्या क्या है? What are the 3 groups attached on this? अच्छा बताइए, ये फर्स्ट कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन एटम है, या थर्ड कार्बन एटम? Yes, sir. दिस कार्बन, कौन सा कार्बन एटम? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? First one. बस क्या है, पहले ग्रुप. So your voice is breaking again. I'm asking what are the 3 groups on this carbon? Am I audible? Hello?
Hello, am I audible? Sir, your voice is Yes. Yes, Rishita? Yes, sir, you're audible. Is my voice breaking for you also, Rishita? No, sir. So, Zaina, maybe आपसे कुछ है. Am I audible now, Zaina? और सब ठीक है. yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए. What are the three groups? Can you not say that? नहीं पता आपको. What are the three groups यहाँ पे? Hydrogen. बस आगे कर लेंगे आप. ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा. Okay. इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा. ठीक है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट जाएगा. Yes, sir. सी द वे हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड दी. कीटोन में हाइड्रोजन से मतलब ही नहीं है हमको. आई वांट टू फोकस ऑन द Okay. कार्बन कार्बन एंड राइट साइड में हमको कुछ नहीं चाहिए. वो मतलब नीचे रहेगा, लेफ्ट साइड रहे, राइट साइड हमको खाली चाहिए. ठीक है. ठीक है. ठीक है. अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ना. एक्सपेंशन में ही आपके मतलब जो दिक्कत होगी ना, वो एक्सपेंशन में ही है. उसके बाद काम आसान है. करेक्ट साइना? चलो. माइक ऑफ है आपका साइना. ठीक है. So let me make the products. ना, थोड़ा समझ में आया साइना? बेसन हो. Yes, sir. CH3 carbon इसमें लगता है तो OH. Beneath you will have CH3. फिर आपके पास आ जाएगा कार्बन. Two hydrogens like this. Single bond carbon, double bond O, CH3. And once you heat it, you'll get CH3 carbon. Remove CH3 double bond carbon with one hydrogen and C double bond O and CH3. Rishita, are you done writing? Yes, sir. So, so this is how we are going to make the product. अब इसके बारे में यहाँ पे regarding the aldol condensation, like when aldehydes and ketones when aldehydes and ketones
with at least one alpha hydrogen, at least एक आपके पास अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए ना, बिकॉज पहले स्टेप में आप क्या चाहिए, you need an alpha hydrogen with at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of undergo a reaction in the presence of dilute base as catalyst, dilute base as catalyst to form beta hydroxy, to form beta hydroxy aldehydes, इन्हीं को बोलते हैं aldol, because it is having an aldehydic group as well as an alcoholic group. ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। इसको कीटोन्स भी बोला जाता है, बट ज्यादातर आपके लाइक एल्डिहाइड्स और रादर एल्डोल इट इज एवीन्स, लाइक इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कीटोन्स आल्सो, ठीक है ना, एल्डोल ही बोलते थे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को भी एल्डोल ही बोल दिया जाता है, ठीक है, बट प्रॉपर नेम इज क्या है, कीटोन, दिस इज एल्डोल, दिस इज एल्डोल रिएक्शन। देखिए यहाँ तक पहले स्टेप तक जो रिएक्शन दैट इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। डज दिस मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, देन यू राइट डी एल्डोल और कीटोन, डी एल्डोल और कीटोन easily lose water to form alpha beta, to form alpha beta unsaturated carbonyl compound, alpha beta unsaturated carbonyl compound। This reaction, इस रिएक्शन को बोलते हैं aldol condensation। Please copy this down। Rishita, let me know once you're done।
Sorry, I was on mute. Right, cross aldol condensation. Okay. See, Arishita. In cross aldol condensation, you will be having two different aldehydes or two different ketones. For example, CH3CHO plus CH3 C double bond O CH3. Okay. Now what will happen is this aldehyde will undergo self-aldol condensation with itself. Some molecules of acetaldehyde will react with another molecules of acetaldehyde and make aldol products. Another thing that will happen is this ketone will undergo self-aldol condensation and it will form products which are self-aldol. Then these two are going to react with each other. Okay? So totally you are going to get 4 different products. Fine. First of all, we will talk about the self-aldol condensation of this acetaldehyde. So you have CH3. And now I'm going to make a product like this, is Jasola. Direct product. Now we made once the direct product like this. Plus we'll have carbon with 2 hydrogens like this, 1 hydrogen below, and then CHO. So I will remove the water molecule like this. I'm going to make the direct alpha beta unsaturated aldehyde. Okay, water is removed and you will get CH3, carbon with 1 hydrogen, double bond, carbon with 1 hydrogen, and CHO. Same thing I will do for this ketone also. CH3, single bond carbon. See, when I have to make the direct doubly bonded or the alpha beta unsaturated hydrocarbon, then I will write the double bond O like this, and remove 2 hydrogen atoms. Double bond O, CH3 here, plus this carbon atom with 2 hydrogens, which are going to be removed, 1 hydrogen below. Here you are going to have C double bond O and CHO. The expansion of alpha carbon is almost similar, and we are going to remove this. And we are going to get CH3, single bond carbon with 1 CH3, double bond carbon with 1 hydrogen, single bond carbon, double bond O, single bond CH3. यहाँ तक समझ में आया officially? Zaina and Rishita. Zaina, we are seeing cross-aldol condensation in which we are going to have 2 different aldehydes or 2 different ketones or 1 aldehyde and 1 ketone. So there are 4 different reactions which can happen. The first 2 reactions are the self-aldol condensation of the 2 different molecules. So in the first cases, CH3CHO is undergoing aldol condensation with itself. Another reaction you have written, the acetone is undergoing aldol condensation with itself. Does that make sense, Rishita and Zaina? Yes, sir. Rishita, समझ में आया यहाँ तक? Yes, Rishita. Yes, sir. ठीक है. In the next case, what we are going to do now? अब हम क्या करेंगे? We'll take one case in which we are expanding the carbonyl
of acetaldehyde, and in the other case we'll be expanding the carbonyl of acetone. ठीक है, तो एक का कार्बन एक्सपैंड करेंगे तो दूसरे का ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू एक्सपैंड द अल्फा कार्बन. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. इन द फर्स्ट केस व्हाट कैन हैपन, CH3 C double bond O hydrogen like this, plus I will expand the alpha hydrogen of the acetone hydrogen. डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरह से. कार्बन, देयर आर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, C double bond O and CH3. अच्छा वेट अ सेकंड, यहाँ पे CH3 होगा, माय बैड. ये वाला हमने यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है ना. You, I hope you can see the last product I have made CH3. In this case, what going to happen? इस तरह से आपके पास CH3 carbon with one hydrogen with a double bond carbon with one hydrogen, single bond carbon, double bond O and CH3. For the next case, I am going to expand the carbonyl of ketone. CH3 carbon, double bond O, नीचे भी CH3, and I will expand the alpha hydrogen of the aldehyde. Like this. Once again, this H2O will be removed. You will have CH3, single bond carbon, single bond CH3, double bond carbon with one hydrogen and CH. आराम से बिल्कुल ये चारों प्रोडक्ट समझ समझ के बिल्कुल बनाइए. स्टार्टिंग में जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, these two products are products of cell aldol condensation. These are products of cross aldol condensation. Raise your hand once you're done. Try to see if you're having any doubt, okay? Raise your hand once you're done. Waiting for Zaina.
देखिए एक और, we are going to do aldol cross aldol condensation, ठीक है ना। बट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है। लेट्स सपोज वी आर हैविंग, कितना नंबर एग्जांपल हो जाएगा इसका, ये तो फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, CH3 CHO प्लस HCHO। CH3 CHO क्या है? दिस इज इथेनॉल, दिस इज मीथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड और ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। नाउ दिस कार्बन एटम इट इज हैविंग, इसके पास अल्फा कार्बन भी है और इसके पास कार्बोनिल भी है, but this is only having what? Only carbonyl. This does not have any alpha carbon. That is why it cannot undergo self-aldol condensation. And सिर्फ एक ही केस बनेगा। एक केस तो ये होगा that what will happen? This will undergo self-aldol condensation. And दूसरा क्या होगा? इसका alpha और इसका, because this is having only carbonyl, the formaldehyde is having only carbonyl, तो उसके carbonyl को ही expand कर सकते हैं, दूसरा कोई और प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है, राइट। जैसे कि in the previous both these carbon atom they had alpha carbon as well as carbon। तो जब क्रॉस करना था तो एक बार हमने एक का कार्बन एक्सपैंड किया, दूसरे का अल्फा। द सेकंड केस वी एक्सपैंडेड द कार्बन ऑफ द सेकंड वन और अल्फा ऑफ द फर्स्ट वन। दैट वी कैन नॉट डू हियर बिकॉज द सेकंड कंपाउंड इट इज नॉट हैविंग एनी अल्फा कार्बन। एक तो प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा दैट CH3, जो सेल्फ एल्कोहल कंडेंसेशन से बनेगा, दैट विल बी CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखा आपने प्लस कार्बन, द 3 हाइड्रोजन्स एंड देन CHO। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से H2 will be removed, you will have CH3 carbon hydrogen double bond carbon hydrogen CHO, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, another case will be what? We will expand the carbonyl of formaldehyde only, carbon double bond O, और बाकी क्या है? एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, plus we'll expand the alpha of this one, carbon with 2 hydrogens, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ नीचे, single bond CHO। So you'll get hydrogen as it is, carbon as it is, hydrogen as it is, double bond carbon, one hydrogen and CH। Make sense? Everyone picture me? So how are there 3 hydrogen atoms for एक the second. पहला केस, पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन जाए ना, which reaction? second one, this HCHO? हाँ, तो इसमें ना क्रॉस हो रही है, ये तो सेल्फ हो रहा है, this cross, so we are expanding the carbonyl of this one and alpha of CS, alpha of formaldehyde। Yes, sir. देखिए जरा, got it? Yes. Please just give me 2-3 minutes
I'm going to give you one question. ठीक है ध्यान से. Give me this a second. You have CS3 CHO plus benzene के पास CHO. घबराना बिल्कुल नहीं है आप. This carbon atom, ये carbon atom है, इसके पास this is having, yeah, this is having a carbonyl carbon, but it is not going to have any alpha hydrogen because this is the alpha carbon. And carbon, if I make all the bonds and show it clearly like this, then this already has how many? 4 bonds. So this carbon will not have any hydrogen. ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है. इट इज वेरी सिमिलर टू फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड में वी हैव कार्बन, here also we have carbon. Formaldehyde we have one hydrogen, here also we have one hydrogen. Instead of the hydrogen of formaldehyde, the second hydrogen, we are having a benzene ring. That's it. उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है. There is no other difference. Instead of hydrogen आप बस बेंजीन रिंग को बनाते जाइए, थोड़ा हिम्मत करके. हाँ, like थोड़ा हिम्मत लगेगा बस. That's it. You need a bit of courage. Instead of hydrogen you write benzene ring. That's it. उसके बाद होता जाएगा. ठीक है, please try to do this. पहले रिएक्शन तो सेम होगा सेल्फ वाला, बिकॉज द सेल्फ सेम ही है CH3CHO. सेकंड वाले में बस आपको हाइड्रोजन की जगह क्या करना है? बेंजीन लेना है. चलिए प्लीज कीजिए जरा. Try this, Rishita and Zaina.
ओके, जाइना इज डन। हाँ, तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला भी सही है, सही है, वेरी गुड, बहुत सही। तो पहले वाला तो बना रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं। ओह माय गॉड, आई वाज नॉट, वो तो दो सर करेक्ट बाय द वे है ना। सेकंड वाला ये बना रहे हैं आपके लिए। इधर हाइड्रोजन, नीचे हमने रख दिया बेंजीन को ना, देखिए आसानी के लिए ना वी विल राइट पीएच एंड यू कैन यूज दिस, व्हाट आई वुड से चीट कोड्स, और डबल बॉन्ड ओ। अब कितना मतलब सिंपल लग रहा है, मतलब हल्का लगने लगता है, लाइक इफ यू राइट टीएच इट फील्स वेरी लाइट नाउ, है ना, बहुत हेवी नहीं लगता है नाउ। ठीक है, बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग इन द बेंजीन पार्ट, वी डोंट हैव टू शो द बेंजीन, वी विल जस्ट राइट पीएच। ठीक है, प्लस अच्छा इसी का कार्बोनिल क्यों एक्सपैंड किया, बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाउ कैन वी एक्सपैंड दिया अल्फा कार्बन, हियर वी आर हैविंग अल्फा कार्बन, यहाँ पे हम करते हैं, और यहाँ पे आपके पास होगा सी एच ओ गिव्स हाइड्रोजन कार्बन पीएच डबल बॉन्ड। गॉट दिस सॉल्यूशन गाइस, विषय आपको बना था। हाँ ऋषिता टेल मी, आपका बना था प्रोडक्ट, नहीं बना था क्या, Yes, sir. बना था नहीं बना था, Yes, sir, I got it. गॉट इट ना, ठीक। तो अब उसके बाद है, उसके में सेकेंड, एक छोटा सा टॉपिक हम आपको करा देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन, एंड देन यू विल बी एबल टू, you will be able to do today's assessment basically, right? तो कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बस हम एक चीज लिखाएंगे, आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, दिस इज गिवन बाय, दिस रिएक्शन is given by, this reaction is given by aldehyde and ketones that do not have, that do not have alpha hydrogens, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसी, वही ये रिएक्शन। ठीक है, मेक सेंस ऋषिता है ना, फॉर एग्जांपल HCHO, this will not, this will give the chemical reaction. Similarly, benzaldehyde, benzene ring with a CHO, this will give a, the chemical reaction. ठीक है, मेक सेंस, इस वाला पिक्चर नहीं, Yes, sir. बस। Yes, sir. So that's it for today. आपको बस असेसमेंट, give me a second guys.